So I am Ranju Dodum. I'm the Vice President of our Arunachal Pradesh Union of Working Journalists. And today we are gathered to conduct a workshop by the Arunachal Press Club on the basics of journalism. I think it's a workshop that is required for working journalists who have years of experience, but also who are new to the field, because इससे एक रिफ्रेश करने का एक तरीका होता है दूसरे जॉब्स में भी, वेदर यू आर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, बीच बीच में रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है. तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये सब इस टाइप का वर्कशॉप किया जाए. एंड वी हैव एमिनेंट journalists who have given a lot of time and their effort to journalism, to the field in Arunachal Pradesh as well, starting from senior journalist Mukul Pathak to Tongam Reena ma'am, our current APC at the Press Club President Dodum Yangfo, and our union President Dahey Sangno. But apart from that, we are thankful that the current CEO of Itanagar Smart City and a former journalist himself, in fact one of the first journalists, indigenous journalists from our Arunachal Pradesh, Mr. Dahey Sangno is also here. We are very thankful that he could make time for us to be here and speak to not just the young journalists, but also a few older ones like us as well. So we are very thankful, and hopefully we can all learn something which will enhance our career in the future as well. Totally different from what is happening here today. In those days, the audience were also different. Now the profile of audience has also changed. The kind of content they need in news has also changed. So we need to improve a lot in this regard. So current scenario, there's very thin line that differentiates between good journalism and bad journalism. So during this morning's discussions with Mukul, another resource person out here, he says that it's the attitude or the mindset of the audience which has changed. That's why giving them content according to their needs. That is his point. So my question to you is, who is at fault? Is it the journalist? क्या journalist का गलती है कि उसको audience को ये आदत करा दिया? ना यहाँ पे ऑडियंस का गलती है कि उसका आदत ऐसे हो गया, बिकॉज वी लिव इन ए पोनिफाइड वर्ल्ड. आवर जर्नलिज्म हैज ऑल्सो बिकम पोनिफाइड. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस वर्ड, द पोनिफिकेशन ऑफ जर्नलिज्म, that is happening here. We are habituated to reels, as Sanju has stated in the morning. Ranju has stated in the morning that we are very much habituated by reels and viral contents. Because of that, our journalism is also becoming ponified. So what is ponification of journalism? We go for sensationalizations and also provocative content, and we give prioritizations to shock value of the news. We are not judging a content based on the qualitative research that has gone into it while producing the news. Rather, we are checking how much reactions the news is getting, okay, and how many people are watching. So this is the kind of deteriorations of the quality of journalism that is happening in our state. हमारा गांव में एक जमाना में, स्पेशली इस कम्युनिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, टॉयलेट कैसे होता था और पिग स्टाई कैसे होता था? दे वर नॉट सेपरेट. एक ही जगह में गांव में रखता है, वहीं पे हकता था. अभी गलती किसका है? अभी क्वेश्चन का ही आपको पता है, गलती यहाँ पे किसका है
क्या वो सूअर का है जो जो हक देता है उसको खा रहा है, ना ये इंसान का है जो सूअर को वहां बांध के रखा है और हक रहा है और सूअर मजबूरी में खा रहा है। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑडियंस कि जो डेटोरेशन हो रहा है हमारा जर्नलिज्म को लेके, गलती क्या हमारा ऑडियंस का है कि हम लोग दे हैव बिकम वेरी मच हैबिचुएटेड टुवर्ड्स स्ट्रेस जर्नलिज्म, और वो लोग जो जंकीज बन गया है, जंग जर्नलिज्म को पसंद कर रहा है ना। हम लोग का जर्नलिस्ट लोग का गलती है कि हम उसको कंटेन कर रहे हैं। आई मीन व्हाई ऑन द अर्थ यू थिंक दैट द ओपिनियन ऑफ पर्सन लाइक लेजेंडरी आंटी मैटर्स इन पब्लिक शूज? आप क्यों सोचते हैं? और ऐसे कितना सोशल एक्टिविस्ट का ओपिनियन को आप इतना उसको वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि लोगों का नजर में वो हीरो बन जाता है, एंड यू आर क्रिएटिंग इन द प्रोसेस ए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, जिसका आप खुद बाद में क्रिटिसाइज करना शुरू करें कि ये आदमी क्या बोलता है, ये आदमी क्या करता है, तो बर्बाद ही कर देगा। हमारा जो ऑडियंस का टेस्ट बट भी ऐसे हो गया, ऐसे ही कंटेंट लोग वायरल हो रहे हैं। तो यहां पे मुद्दा आता है रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के ऊपर में, एथिकल जर्नलिज्म का ऊपर में। तो हम लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं? प्रिंट कर रहा है, लेकिन प्रिंट का भी अपना इश्यूज है, उसको ओवर शैडो कर दिया है डिजिटल मीडिया ने। प्रिंट आजकल कौन पढ़ता है? हमारा सोसाइटी इज मूविंग अवे फ्रॉम ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी टू एंटरटेनमेंट बेस्ड सोसाइटी। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है इट इज ए इंफोटेनमेंट। हमको हमारा जो जो क्या बोलते हैं डोपामिन लेवल जो है इतना बदल चुका है कि हमारा सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट भी चेंज हो रहा है। ये फेक है कि नहीं है? आप देखिए, प्रिंट को कौन पढ़ता है आजकल? कोई नहीं पढ़ता है, बहुत कम लोग पढ़ता है। और जो कंटेंट कौन देख रहा है? द यंग पीपल। इफ यू गो टू एनी इफ यू आर फ्रॉम डिजिटल मीडिया, आप अपना खुद का पेज का एनालिटिक्स को चेक करके देखिए। मेटाबॉलिक यू गो थ्रू द एनालिटिक्स ऑफ योर पेज, उसका जो डेटा निकाल कर देखिए कि हु आर दी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑडियंस फॉलोअर्स ऑफ योर चैनल, कौन है? देयर यूथ्स, जो 18 साल से लेके 35 इयर्स का 20 का यूथ है। ये लोग ऑलरेडी एडिक्टेड कम्युनिटी है आपका एंटरटेनमेंट का, ठीक है, रील्स देखने का आदत वाला लोग है। और न्यूज देखता भी तो उसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यूज को ढूंढता है, और हम उसको वही चीज दे रहा है क्योंकि उसको वो चीज पसंद है, वो चीज वायरल हो रहा है। उस चक्कर में यू आर स्लोली किलिंग जर्नलिज्म। कोई भी जर्नलिस्ट है, उनका कोई ऑफिस ही नहीं है, अपना घर ही ऑफिस है और अपना मोबाइल ही ऑफिस है। क्योंकि मोबाइल से वीडियो खींच लिया, डायरेक्ट वहां से फेसबुक पेज में अपलोड कर दिया, एंड हिज वर्क इज डन। तो द रोल ऑफ ऑफिस जो एक स्ट्रक्चर होता है, जहां में हम लोगों ने जब शुरू किया था, मीडिया में जब आया था, तब ऑफिस में एक माहौल होता था, और उस ऑफिस में सीखने के लिए ही सबसे ज्यादा मौका मिला था हम लोग, क्योंकि सीनियर लोगों को उसमें मिलता था एंड दे गाइड अस। वो कुछ कमियां हैं तो वो भी सिखाता था। और हम लोग को उस टाइम में सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग ने जब मीडिया में आना शुरू किया, स्टार्ट किया था, उस टाइम सीनियर लोग हम लोग को एडवाइस भी देता था, गाली भी देता था, उनको हम लोग ब्लेसिंग के हिसाब से लेता था। आज की डेट ऐसा हो गया है, आप कोई जूनियर को अगर कुछ सजेशन भी देगा ना, दे विल माइंड इट, तो वो लेना भी नहीं चाहता है। तो एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो उसमें भी जो सीनियर लोग हैं, उन अपना रोल को प्ले करने के लिए उन लोग को दोबारा सोचना पड़ता है कि मैं ये बोलूं या ना बोलूं। ये हम लोग का हालत है। बट एनीवे आई एम ग्रेटफुल टू एपीसी एंड APUWJ की उन लोगों ने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, मुझे दोस्त बोलने के लिए कहा। तो हमें अभी लोगों को मजबूर करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट लाने की आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे अभी वो वायरल वाला बात दहेज जी बता रहा था, तो ये मीडिया हाउस का जो मैनेजमेंट टीम है, उन लोगों का भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी भी शायद जो अच्छा मीडिया हाउसेस हैं, देयर आर सम इंडिपेंडेंसी टू द जर्नलिज्म। वो लोग जो न्यूज करते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% फ्रीडम मिलता है जर्नलिस्ट को। आप जिंदगी में कोई भी मीडिया हाउस में काम कीजिए,
मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम आपको 80% तक 90% तक आपको फ्रीडम मिलेगा, बाकी 10% तो मैनेजमेंट का इंटरेस्ट सकता है, क्योंकि ही इज डूइंग ए बिजनेस, उसका कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। बट एज अ जर्नलिस्ट यू विल बी आस्क्ड कि आपने क्या न्यूज बनाया। ये जैसे दया जी बता रहा था कि कोई लीडर लोगों का पसंदीदा एक मीडिया हो सकता है, उसका ये जर्नलिस्ट पीछे घूमते रहते हैं मीडिया का, तो वो होता है। मैं आप लोग को और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी डिजिटल मीडिया में आप लोग का यहाँ पे चलाने के लिए अगर आपके पास 3-4 एम्प्लॉय भी हैं, सैलरी देने के लिए और उसका डे टू डे एक्सपेंसेस क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास रेवेन्यू कहाँ से है? फेसबुक वीडियो अगर वायरल हो गया तो आएगा, अदरवाइज जैसे दहेज जी बता रहा था, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अच्छा कंटेंट को देखने वाला व्यूअर्स बहुत कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा कंटेंट को आप लोग अवॉइड करें। अच्छा कंटेंट को भी दिखाना है, ग्रीवेंसेस को भी दिखाना है। मैं अभी बता सकता हूँ, ये आरके मिशन का पोस्ट ऑफिस से थोड़ा आगे जाके रास्ता में गड्ढा हुआ है। आज आप जितने भी इधर मीडिया के आप लोग मौजूद आते जाते रहते हैं, देखिए आज की डेट में साइज को माप के रखिए। टेलर के पास पिका होता है ना, वो मापने के लिए मेजरमेंट टेप होते हैं ना, और नेक्स्ट वीक में जाके दिखाइए लोगों को। एक वीडियो आज लेके रखिए आज की डेट में कि ये 2 फुट है, ये 3 फुट का है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके रखिए, और 10 दिन की बाद जाके वही मेजरमेंट टेप से नेक्स्ट एक वीडियो बनाइए कि आज का डेट ये है, 10 दिन में ये गड्ढा इतना बड़ा हो गया है। अगर ये गड्ढा को उसी रोड में पीडब्ल्यूडी का जेई से लेकर एम्प्लॉई से लेकर मिनिस्टर से लेकर सब कुछ उसी रास्ता से जाते रहते हैं, लेकिन नोबडी हैज टेकन केयर टू रिपेयर दैट छोटा सा होल को रिपेयर करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है। मैं आप लोग वेट कीजिए, आज का डेट में लीजिए, एक हफ्ते में तो आप आना जाना करते रहते हैं, उस हिसाब से कंटेंट बनाइए, लोग पसंद करेगा। इसमें किसी को ना गाली देना है ना किसी के पास, आपका विजुअली यू कैन एस्टैब्लिश इट कि देखिए एक हफ्ता पहले हमने ये स्टोरी ये वीडियो लिया था, एक हफ्ते के बाद देखिए इतना बड़ा हो गया, और इसी काम के लिए अगर इसको रिपेयर कर दिया था तो ये 500 रुपए में हो जाना था, अभी ये 5 लाख तक चले गए, और ये 5 लाख गवर्नमेंट खर्चा करेगा, रोज जब पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो पैसा किसका है? आम आदमी का है। तो हमारा रिपोर्टिंग करने का जो स्टाइल है, हम उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। हमारा यहाँ फैक्ट चेकिंग नहीं होता, फैक्ट चेकिंग नहीं करता है ना, वी डोंट डू फैक्ट चेकिंग, नन ऑफ अस डज, नेचुरल टाइम्स नहीं करता, बेसिक करता है, प्रेस रिलीज जैसे दिया वैसे दे दिया, बाय लाइन। इज दैट एथिकल रिपोर्टिंग? नो, वेयर लाइक गुवाहाटी रिपोर्टर्स, गुवाहाटी में व्हाट हैपेंस, ब्यूरोस है ना, we still have bureaus in Guwahati, some, not all, but press releases that goes from the Chief Minister's office, they do, right? They just correct the grammar, they don't do any fact checking, nothing, they just give the name and it becomes a byline story. That is not reporting, that is not journalism, right? I think we should try and avoid this. Thoda sa, yes, Dahey said 2-3 quotes from here and there, doesn't make sense, yeah? Reporting has to be detailed. But we also need to be sensitive, culturally sensitive for now, it's very important. There are certain things we cannot report about in Arunachal, right? One time I saw that we definitely as reporters should not be talking about our tribe affiliation. Talk about us as indigenous people, but not which tribe you belong to. I remember one of the reporters, I don't recollect the name, saying, actually targeting an officer saying that that you belong to a particular community. That is not your job, no? Was that necessary? And I don't think the union took it seriously also. Those kind of things should be avoided. It's absolutely not necessary. Who you are, where you come from should not interfere with our, I'm talking, when I say you, I'm talking for myself also. Don't think that, that Puri is going up and preaching. So that is why we're here. But fact checking, one more. That mistake most print media have done, whoever took PTI subscription. This was very funny, but you can't see it. Oh, so there it is. This is a slide that I made. This is a report which says that Shillong had 0
degrees in December 2023. Okay? And people from Shillong started saying, but it was not that cold in Shillong. You know, it was not 1 degree. This news came from BTI. We put it, and when they started saying, okay, this did not happen, it was not Shillong where it was 1 degree, you know. Nobody bothered to check this part. There is the temperature of that particular day. You know what was the date? December 2, right? So December 2, it was 29 degrees. Yeah? Whereas the report was, it was the coldest day in Shillong. We don't do fact check, that's why we go wrong, especially with this race to be up there and, you know, be ahead. We make all kind of mistakes. Forget about grammar. Grammar is the least of our concerns right now. Content is also sometimes so bad, right? And fairness and accuracy, you all know. We forget that, right? Most of the fairness that it might be, but accuracy part we forget. Sometimes we don't do basic things like, you know, where it happened, how it happened. It's like, oh, it was there, that's why I put it. Most of the time the news channels, even the newspapers, won't be able to tell you where the source was from, right? Because it takes time and effort and money to find your sources. Not everyone has that kind of time or money or resources. There are a few things I would like to highlight. Why we are failing our state as journalists in giving accurate information to our people, to our masses. There are so many factors, but I would like to highlight a few things. Since my seniors, they have spoken at length on how quality journalism should be, I think I have only a few things left to speak, but I would, of course, I would share among our reporters and among our contents, what we put out on, be it on in print media, be it on social media, be it on electronic and digital media, a lack of accuracy. I think many of you, you might have noticed, like the current stories doing rounds about the confiscation of wild herbs and vegetables from the digital vendors by district administrations. I would say self-styled biodiversity chairperson who identified him as a representative of forest department. Thankfully, forest department disowned him, and we just put out those information, including me. I did that reporting for Arunachal Times. We just put out that information on our respective page and respective media. We, forget to identify, since if any of you, gone through, if you have read about that order issued by Deputy Commissioner Talo Kutum sir on March 27, 2025. If you read that order, somewhere it written, forest item. Forest item. If you are a journalist, you need to you have to able to pinpoint what the things are left with the authorities. In that order, it's somewhere it's mentioned forest items. Forest items is a vague term for not only for the tribal state like Arunachal, but I think in generic terms you may say it's a vague term, because in forest items lot of things can come under. Like onion is a famous herbs for everyone, every tribe. We eat onion, we eat oil, and so many things are there. And based on that order, this guy, he gone on to seize all those vegetables. Why I am pointing this? Because we were lack of
accuracy. We could have pointed out these flaws from the part of district administration and from the part of forest department, but we failed. We just gave a plain report. In fact, somewhere I saw on social media, one guy, he did a comprehensive analysis on that topic. How forest departments should come out. If at all it was a banned and endangered species in endangered herb, forest department should notify. But you can't. Those notified herbs cannot be harvested, cannot be planted, and cannot be eaten. Those things should be clear lines. That's why I'm saying we were lack of accuracy. And why I'm pointing out, like I said, inaccurate reports, gives half-baked information to our masses, our society. When we are fed with a half-baked information, our society will not transform. As my seniors have pointed out, and we tend to, sensationalize any report. दुमने माबो पिकनिक आपको कौन से एंगल से न्यूज लगता है? आप लोग बताइए, दुमने माबो पिकनिक आप लोगों को कौन सा एंगल से न्यूज लगता है? जब हम पढ़ा था, मेरा जो समझ है न्यूज का वो सेंस अलग है. शायद अभी क्योंकि जर्नलिज्म इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोफेशन, शायद चेंज भी हो गया होगा. अभी दुमने माबो पिकनिक भी शायद उसमें न्यूज बनता होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं. हम जो किताब पढ़ा था उसमें ये सब नहीं है. और हो गया आपका गालों में गातुर होता है, गातुर, और हम लोग का निशी में समी होता है. समी जो इंग्लिश में बोलेगा तो लास्ट सफर, जो गांव का सबसे बूढ़ा या सबसे बूढ़ी को जो मील खिलाता है, उसका भी न्यूज बन रहा है. पिकनिक में आप न्यूज बना रहा है. अब अपना बूम माइक का लोगो लेके आप पिकनिक में इंटरव्यू भी ले रहा है. ये सच में जर्नलिज्म है क्या? ये न्यूज है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग से होता. हमको नहीं लगता है कि एक पिकनिक में न्यूज बनाना है. जो डेली इवेंट होता है, किसी का बच्चा का बर्थडे हो रहा है, उसका न्यूज बना रहा है. आप तब इससे आपको यह पता चलता है कि आपको एक मीडिया हाउस और एक प्रोडक्शन हाउस का डिफरेंस अभी तक आपको उसका क्लियरिटी आपका पास नहीं है. एक प्रोडक्शन हाउस जो वो तो आपका प्रॉफिट ड्रिवन होता है, उसका एक प्रोडक्शन हाउस का, और एक मीडिया हाउस का बेसिकली सोशल सर्विस ही रहता है. उसका एंगल अलग रहेगा. आपका प्रोडक्शन हाउस का वो मालिक जैसे चाहेगा, जिसका आप बनाना है, वो आप प्रोग्राम पैकेज दिया है, उसका हिसाब से चलेगा. लेकिन एक जब आप मीडिया हाउस करता है तो वो आपका डायरेक्शन से चलेगा. यहाँ में आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग क्लब कर रहे हैं. आप एक रिपोर्टर हिसाब से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आप एक मैनेजर हिसाब से कर रहा है. जब आप रिपोर्टर हिसाब से कर रहा है तो आपका एक स्टोरी को देखने का आपका तरीका अलग होगा, आपका नजरिया अलग होगा. लेकिन आप एक मैनेजर का हिसाब से देख रहा है, सर्कुलेशन मैनेजर का हिसाब से देख रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का हिसाब से देख रहा है, तो आपको हर चीज में आपको मॉनिटरी वैल्यू ही देखेगा. उसमें आप दुमने माबो को भी न्यूज बनाने का जबरदस्ती कोशिश करेगा. दुमने माबो पिकनिक को भी, वॉलीबॉल कंपटीशन कॉलोनी का, उसको भी आप जबरदस्ती न्यूज बनाने का कोशिश करेगा. क्योंकि आपका उसमें आपका न्यूज का वो सेंस, आप जानबूझ के मार दिया उसने, आपने मारता है, आप मार देता है. वो आपका जो एक जर्नलिस्टिक जो आपका एक आई रहता है, जो नोट्स रहता है न्यूज का, उसको आपने जानबूझ के बंद कर दिया. क्योंकि आपका एंगल अलग हो जाता है. आपका प्रॉफिट मोटिव से आप जो न्यूज नहीं बनता है उसको भी आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये चल रहा है. My name is Dodum Yangfo and I'm the president of Arunachal Press Club. Today we had a workshop on basic of journalism. तो turn up to use था, और आज ये वर्कशॉप कराने का ये था कि बहुत से नया जो जर्नलिस्ट आया हुआ है, जो यंग जर्नलिस्ट है,
उन लोगों को जर्नलिज्म का कुछ ABC पढ़ाने के लिए हम लोग ने वो ऑर्गेनाइज किया है। इसमें ऑर्गेनाइजर जो अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसके बाद अरुणाचल प्रेस क्लब ने साथ दिया है। आइडिया ये है कि क्योंकि आपको पता है जर्नलिज्म एक इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोफेशन, जहाँ में एक नया चीज़ हमेशा आते रहता है, तो वो लोग को अपडेट करने के लिए, वो लोग को बेसिक जो है सिखाने के लिए, समझाने के लिए आज हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। और ये हमेशा हम लोग का एनुअल एक इवेंट रहता है, हमेशा टाइम टू टाइम जब भी वो मिलता है हम लोग ने कराता है। इस बार हम सोचा कि डिस्ट्रिक्ट वाला भी आएगा बोल के, तो अनलकीली डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम पार्टिसिपेंट्स आया है। तो जो भी ईटानगर में जो है, ईटानगर नालंग जो ये एनसीआर इसमें ICR रीजन में है, सिर्फ वो जर्नलिस्टों की आ पाया है। और नेक्स्ट टाइम हम होप करता है कि एक प्रॉपर एक वर्कशॉप होगा जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होगा, ये करने का प्लानिंग है। और आज का रिसोर्स पर्सन में हमारा फॉर्मर जर्नलिस्ट दाहे संगनो, जो कि स्मार्ट सिटी का CEO है और बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट था। फिर सीनियर जर्नलिस्ट टोंगम रीना जो डिप्यूटी एडिटर है अरुणाचल टाइम्स का, वो रिसोर्स पर्सन रहा। और सीनियर जर्नलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट करते हुए मुकुल जो DY 365 से है। फिर हमारा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट अमर संगनो रिसोर्स पर्सन था, और मैं खुद भी रिसोर्स पर्सन था। आज हम लोग ने बहुत से टॉपिक को वो किया है, एथिकल जर्नलिज्म का बारे बात किया है, ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक मीडिया हाउस का स्ट्रक्चर कैसे रहना चाहिए, उसका ऊपर बात किया है। उसका डूस एंड डोंट्स का ऊपर हम लोग ने बात किया है। और ये वर्कशॉप ये कंटिन्यू रहेगा, ये आज एक ये है, नेक्स्ट बार और बिगर वे में और एक अच्छा प्लान का साथ और मास पार्टिसिपेशन का साथ कराने का हुआ है हम लोग का प्लान है। थैंक यू।